everyone, it's your girl Shalini. Welcome back to my channel. I really hope you guys are doing well. So in today's video, I'm going to show you how I created this beautiful soft smoky eyes with nude lips. बहुत ही easy इस look को create करना. And today's look is inspired by the top trending song Tip Tip from सूर्यवंशी जिसमें अक्षय कुमार और कटरीना कैफ हैं. You know जब मैंने वो पूरा गाना देखा, my first thought was, oh my god, this is different from the original Tip Tip Barsa. And the second thought that came to my mind, how come her makeup is looking so beautiful? I mean पूरे पानी में वो डांस कर रही है and she's looking so beautiful. हमारा बेस again बहुत लाइट वेट है. The focus was mostly on the eyes, eyelashes and lips. So without further ado, let's begin. Okay everyone, so I've already done my skincare routine. जो भी products मैंने skincare के लिए use किए हैं उन सब का लिस्ट आपको description box में मिल जाएगा. So always start off with a good skincare according to your skin type. 10 मिनट वेट करना skincare करने के बाद and then move on with your makeup. So मैंने lip balm already apply करा हुआ है. I'm also gonna use this lip injection on my lip. This is by Too Faced. This is gonna plump my lips. Okay, this is gonna tingle a bit but not too much. Anyway, I'm used to that lip injection, lip plumper. So ये जो पूरा makeup base है हमारे ये light weight होने वाला है. The first thing that I'm using is this silicone primer. So मैंने ये primer इतना लिया है. I'm just gonna warm it between my finger like that and apply this here on my T-zone, around my mouth, on my chin and under my eyes, over my eyelid. So this is gonna mattify my T-zone area, and also the foundation that we are gonna apply on our face is gonna stick beautifully over this. I'm gonna leave this primer on for at least 1 minute ताकि मेरे स्किन में सिंक इन हो जाए. Okay, 1 मिनट हो चुके हैं. आप लोग देख सकते हो कि कितने अच्छे से, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि उसने मेरी टी-जोन को मैटिफाई किया है और यहाँ मुझे पोर्स है ना उसे भी फिल करने में मदद किया है इसने. नाउ वी आर गोना मूव ऑन विथ color corrector and I like to always color correct around my lips यहाँ because I have pigmentation and foundation does look ashy here इसलिए. Also I'm going to color correct here today and going to point correct where I have acne scars और acne marks. थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे सन बर्न है. यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, दैट सन बर्न बचपन में हुआ था मुझे, तो उसे भी कलर करेक्ट कर रही हूँ. So, अगेन मैं बेस लाइट वेट चाहती हूँ तो मैं कलर करेक्ट अच्छे से कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ ना करना पड़े कवरेज के लिए. और ब्लेंड करने के बाद आई एम गोना लीव दिस कलर करेक्टर ऑन माई फेस फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स ताकि ये भी मेरे फेस पे सिंक इन हो जाए. एंड देन व्हेन आई विल अप्लाई फाउंडेशन एंड द कंसीलर, वो ऑरेंज ना हो जाए मेरा फाउंडेशन और कंसीलर. सो 2 मिनट्स आर डन. कलर करेक्ट मेरे फेस पे अच्छे से सेटल हो चुका है. आई कैन फील दैट. मूविंग ऑन टू फाउंडेशन. फॉर दैट आई बी यूजिंग माई ट्रस्टी फाउंडेशन. ऐसा फाउंडेशन दैट कैन लास्ट ऑन माई फेस फॉर आवर्स. इट कैन लास्ट फॉर अप टू 8 hours and you can build the coverage for this. Also, this doesn't transfer on your clothes. This is sweat proof. So this is MAC Studio Fix Fluid Foundation and I'm in the shade NC43.5 but मेरे पास वो shade नहीं है. So I have the shade NC42 and NC45. So I'm going to be mixing this to make my own shade. तो पहले मैं NC42 ले लेती हूँ in the back of my hand. This much. And then I'm gonna mix NC45 in it. So dotting it all over my face. अगर ये लाइट लग रहा है ना तो this is gonna oxidize. और कवरेज काफ़ी सुंदर देता है ये, buildable coverage जैसे मैंने आपको बताया. I'm also gonna apply this under my eyes as well. Over my eyelid, on my T-zone, around my nose and neck. इसको ब्लेंड करने से पहले ऑन माई स्किन आई एम गोना स्प्रे सम मैक फिक्स प्लस. ओ माई गॉड, दिस गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस. ये हमारे फाउंडेशन को और लॉन्ग लास्टिंग बना देगा. और फिक्स प्लस का काम ही होता है कि लॉन्जिविटी इंक्रीज करे वो आपके फाउंडेशन की, और जो भी प्रोडक्ट आपने यूज़ करे ना दैट कैन ब्लेंड इन विथ ईच अदर. टेकिंग सम एंड यूजिंग माई फाउंडेशन ब्रश आई एम गोना पैट इट इनटू माई स्किन. यू कैन ऑल्सो यूज योर ब्यूटी ब्लेंडर. इतना सुंदर ब्लेंड हुआ है. कैन यू सी दैट? सो नाउ आई एम गोना बी टेकिंग लिटिल बिट ऑफ NC42 एज माई अंडर आई कंसीलर एंड दिस इज ऑल्सो गोना हेल्प टू हाईलाइट अंडर माई आईज. सो डॉटिंग इट लाइक दैट इन माई T-zone एरिया हियर एंड लिटिल बिट हियर. उसके बाद यूजिंग माई कंसीलर ब्रश, दिस इज बाय पैक, आई एम जस्ट गोना पैट इट अंडर माई आईज.
One last time going over with my foundation brush just to make sure there is no streak marks on my face. वैसे ये foundation brush बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आपने मेरा previous video देखा कि नहीं, उसमें मैंने इस foundation brush के बारे में कितनी ज़्यादा तारीफ की थी. Then I'm gonna use this translucent powder by Katrina and just set my under eyes properly and over my eyelid. I'm gonna take my concealer brush, pat my concealer again to avoid any creasing of concealer, and then set my eyes and set my T-zone area as well. Setting around my mouth, and then using a big fluffy blending brush, picking the satin color. This is a mauve color. Tapping off the excess, and I'm gonna apply this on my crease line here and creating a V shape here. And then removing the excess product in the back of my hand and then blending the crease furthermore, diffusing it upwards, ये वाला. Then using this retractable pencil by Mamaearth, this is sweat proof, waterproof, and ये थोड़ा सा मैं टाइम देता है स्मच करने के लिए as compared to their कोल जो तो बिल्कुल ही सेट हो जाता है अप्लाई करने के बाद, इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. एंड अप्लाइंग अ थिक eyeliner. Edges doesn't have to be precise. हम लोग falsies अप्लाई करेंगे ना, इसलिए हम थिक अप्लाई कर रहे हैं अभी. Taking a pencil brush, I'm gonna blend the edges and edges only, like going in swipe motion. So this is what eyes are looking so far. Blend करते करते ना यहाँ पे wing create हो गया. अगर नहीं भी create हो रहा है ना तो it's okay because I'm going to be applying falsies, तो वो इतना समझ नहीं आएगा. Now I'm taking this brown, dark brown eyeshadow in that same pencil brush and applying that on the edges. And then blending it using my fluffy blending brush जिससे हमने crease color apply किया था, and blending it just on the center. Now I'm gonna curl my eyelashes using this eyelash curler and apply this Lash Paradise mascara by L'Oreal. सिर्फ एक ही कोट अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं फॉल्सीज अप्लाई करूँगी. ये इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं फॉल्सीज को स्टिक कर सकूँ अपने रियल eyelashes के साथ, इसलिए मस्कारा अप्लाई करना ज़रूरी है. So I got these eyelashes from Amazon. इनका जो band है ना वो बहुत पतला है and the band is transparent. So I'm going to be applying this one right here. So firstly I'm just going to cut the edges of the eyelashes जहाँ से band visible है. अब मैं eyelash glue apply करूँगी इस पे. And then we are going to wait for it to dry ताकि थोड़ा सा sticky हो जाए. उसके बाद apply करूँगी मैं इसे अपने eyelashes पे. Okay, now I'm going to take my retractable pencil again and I'm just applying this here towards my inner corner जहाँ पे false eyelashes नहीं लगाएं, otherwise it looks very weird, you know, कि यहाँ fuller दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. And going to apply this over my band as well. I'm also going to apply the same kajal on my upper lash line just to tight line it ताकि skin ना दिखे वहाँ पे. Now taking a flat smudger brush, picking this satin mauve color again, tapping off the excess and going to contour my lower lash line with this. And then I'm going to take my pencil brush. I was using this to smudge my kajal and I'm going to pick this brown color in it. Okay, this pencil brush has some black, mixing some brown matte color and going to contour my lower lash line, just the outer half of my lower lash line. It's time to fill up my eyebrows. First, I'm going to comb through them using the spoolie side of this eyebrow pencil. This is by Faces Canada. और ये जो है ना cream form में है ये eyebrow pencil. This used to be one of my OG eyebrow pencil जो मैं बहुत लगाया करती थी. So यहाँ कम stroke दूंगी हल्की हल्की हाथों से. And then I'm going to carve out my eyebrows. यहाँ पे मुझे बाल कम है काफ़ी, तो ऊपर की तरफ. And then I'm going to blend everything together using the spoolie side. Alright, one side is done. I'm going to do this off camera. Alright, my eyebrows are done. I'm going to set my eyebrows in place using this e.l.f. eyebrow mascara. इसमें ना fibers भी आते हैं and also this is going to make sure my eyebrows are not going to budge or move. So what I like to do, I like to go in an angular direction here. जो भी eyebrow product budge किया है, I'm just going to comb through my eyebrows like that ऊपर.
Now I do not think so Katrina was wearing eyelashes. She was wearing maybe individual eyelashes या फिर उन्होंने अपनी eyelashes को fill करवाया होगा. And her eyelashes were like quite curved. So वो वाला look के लिए मैं क्या करूँगी, अपने eyelashes को curl करूँगी मैं falsies के साथ, ठीक है. Grabbing all of my falsies and थोड़ा ऊपर से I'm gonna curl them like that. So can you see the difference, this versus this? This has a like a wispy effect to it, and this is quite curled eyelashes. And then I'm just gonna apply little mascara. I'm going to apply that same mascara on my lower lashes. This is a waterproof mascara. So to contour my face, I'll be mixing this to contour color. This is Cuffs and Lashes 02 Cupcake, and this is Makeup Revolution Blake and Blot palette in the shade Deep Tan. So picking some here. So this is a warm tone contour and this is a cool tone contour. So I'm making that fish face today and then contouring my face. Also gonna contour my jawline, my hairline, just a little bit ताकि ashy ना दिखे यहाँ पे हमारा foundation. And taking a smaller brush, I'm going to contour my nose with this. So starting from here, जहाँ पे मेरा eyebrow शुरू हो रहा है, I'm gonna create two straight line, all right? And then join it यहाँ बीच में एक. I'm gonna blend it in circular motion. You can also use your finger to do that. For blush, I'm going to be applying this Mellow Wine blush by Wet n Wild. It has some sheen as well. Applying it on the apples of my cheeks. And आज मैं contour की तरफ नहीं, contour के ऊपर blush को लेके जा रही हूँ, ठीक है? Applying it on my chin and also on my nose. Going to take my loose powder and my dry beauty blender and going to carve out my face. Now it was hard for me to tell whether Katrina was wearing any highlighter or not, but I saw this behind the scene picture clicked with Farah Khan जिसमें थोड़ा सा highlighted लग रहा था उनका face. Maybe it's the camera, lighting, angle. So picking Becca Cosmetics Champagne Pop highlighter in my highlighter brush. थोड़ा सा highlighter मैं apply करने वाली हूँ. This much is enough. For lipstick, I'll be wearing combination of this two lipstick. This is a brown nude color, peachy brown nude color. First, I'm gonna wear that. Lakme Absolute Melt Matte lipstick in the shade Brown Souvenir. पहले मैं इसे अच्छे से पूरे लिप्स पे अप्लाई करने के बाद I'm gonna wait for it to become a bit dry. उसके बाद सेंटर में I'm gonna apply Lakme Absolute Melt Matte lipstick in the shade Mauve Mix, and I'm gonna mix those color together with the help of my ring finger. So by mixing this two color, we got a similar color to what Katrina was wearing. She was wearing a nude pink color for her skin tone, and this is a nude pink color for my skin tone. And I do feel that she was wearing a comfortable matte lipstick or a lip balm. Last step, I'm gonna use this Fix Plus to set my base again. This is gonna make sure कि जो भी powder product apply किया मैंने अपने face पे, that is gonna blend in with each other. So अपने eyes को close करते हुए पूरे face पे apply करूँगी except my eyes. And quickly gonna fan my face. This is such a easy to create a look. You can wear this look for upcoming wedding season. कोई party कोई function है आपके घर में, उसमें पहन सकते हो आप. Also this look is sweat proof. Our eye makeup is waterproof. I won't say that base is 100% waterproof. Katrina की तरह ऐसे rain में हम dance नहीं कर सकते for the base particularly, but हाँ थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे पानी के, तो it's manageable. Let me know आपको ये look कैसा लगा. मैं ऐसे inspired वाले videos 2-3 साल पहले बनाया करती थी. I want to continue doing this kind of like makeup looks as well, inspired by some celebrity, inspired by some song. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया then do not forget to subscribe to my channel if you haven't already. Like this video, share this video with your friends and family. और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ with brand new content on this channel. Bye guys. Take care. यहाँ हम सूखे बालों में अच्छे नहीं लग पाते. कटरीना गीले बालों में इतनी खूबसूरत लग रही थी.